Report Writing Skills is Ingenium's flagship program. This program is specifically designed for all those people who are interested in developing and improving their writing skills. Internal audit report writing is not like normal report writing. It's more like, very technical. You have to have a lot of essential elements. There is a logical structure to the report and observations. So it's more about getting used to of writing in a very logical and structured manner. इस प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि हमने इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ डाली एंड इन दीज एक्टिविटीज़ participants are allowed to practice and reflect more on these sessions. The instructional design is more of a way that initially there is a concept and then there is an activity, and post activity we do a lot of reflection. So we work in groups. We allow the participants to work on laptops ताकि वो observations जिस एक्टिविटी जिस मोड के अंदर वो प्रैक्टिकली काम करते हैं अपनी वर्क प्लेस के अंदर, उसी मोड के अंदर वी अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. सो इट्स अ वेरी हैंड्स ऑन एंड वेरी प्रैक्टिकल वर्कशॉप. और इस वर्कशॉप के अंदर देयर आर रोल प्लेज, देयर आर ग्रुप एक्टिविटीज, वी गिव अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स. हम इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं. we do a lot of reflection. Report writing is very essential, is very important because a lot of times जो हम messages deliver करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते because the way it is delivered is not actually up to the mark. The auditee finds it very offensive. वो पहले ही back foot पे चला जाता है and therefore the message, the communication gets distorted. The program is relevant for you if you are a preparer of the audit report, as well as अगर आप review भी करते हैं audit report, it's also relevant for you because that allows you to judge the report as per the criteria as mentioned by the Institute of Internal Auditors. The 2-day version of the workshop allows more time for the participants to actually practice. There are much more activities. We have a case study in which we allow the participants to actually apply all those concepts जो कि हमारे पूरे दिन के अंदर हम बताते हैं. There are concepts about precision, there are concepts about conciseness and brevity. किस तरीके से रिपोर्ट को आप स्ट्रक्चर करें in terms of causes, effects, condition, recommendations. There are a lot of things in which you can actually improve your report writing. Words play a very good role in actually convincing and persuading the auditee. We emphasize on the tone of the report. We emphasize on the preciseness of the report. We emphasize on the brevity and conciseness of the report. And this is the reason we came up with this flagship program of report writing skills for internal auditors, so that they can comprehend their hard works and their value, the efforts they have put into the report. That is basically the outcome of their efforts. Basically जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट की तरफ पहुँचती है and that is the only yardstick or measurement stick जिससे इंटरनल ऑडिटर्स की परफॉर्मेंस को वैल्यू किया जाता है. रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स हमारी इसलिए भी कमज़ोर है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन टॉट द सिमिलर वे टू राइट बचपन से when they're to the training program, this typical way to write the audit report during the course of the audit and things like that. So the creativity lacks. So we came up with this program where each and every aspect of the report, the structure, how the words should be used, how to write the report according to severity of the issue, report the positive side of the audit function or audit organizations. All these aspects should cover the entire to make the complete set of the report. My name is Saddar and I work for Philip Morris in the Internal Controls Department. I was here to attend the report writing session for internal auditors today, and it was a very fruitful, very great learning experience for me. We learned how to draft all our audit reports that we're supposed to do every single day at work. So it's going to really benefit me in the work I do. मैं यहाँ पर आया हूँ report writing skills of internal audit. सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे लगी है वो है internal personal skills जो मेरी report writing के लिए से बहुत अच्छे हैं. यहाँ के जो स्टाफ है आपका हसन साहब जो मेरे यहाँ पर ट्रेनर हैं, he really motivated regarding how to write a personal skills of report writing. की पॉइंट्स के अंदर मुझे सबसे जो अट्रैक्ट करा है वो इनका है कंसाइजनेस ऑफ अ वर्ड, कि आपको किस तरीके से वर्ड की सिलेक्शन यूज़ करनी है जो सामने वाले ऑडिटी को पढ़ने में आसानी हो. उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका मैसेज ईजिली कन्वे हो जाता है. आप उसके अंदर वो सारी बातें नहीं लिखते जो डिटेल्ड होती है. आप लिमिटेड बात करके लिमिटेड आंसर ले सकते हैं. I'm Umesh from PCS Internal Audit Department. आज रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेशन था. ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन था. इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी
कि अपनी आप ऑब्जर्वेशन को कंसाइज किस तरीके से कर सकते हैं। जो आप बहुत लंबी चौड़ी बात है 3-4 पेजेस में लेके जा रहे हैं, उसको आप कंसाइज करके 2-4 लाइनों में उसको किस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपनी बात को कंसाइज कर सकते हैं और अपने मैसेज जो है ऑडिटर तक किस तरीके से अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं ताकि वो बात आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके अच्छी तरीके से। इस वर्कशॉप में और बाकी वर्कशॉप में द मेजर डिफरेंस दैट आई फाइंड इज द ट्रेनर. He is very engaging. As I've mentioned earlier, he's very engaging. He keeps you alive. He keeps you awake. He brings a sense of humor into his the way he presents, and बहुत engaging workshop है. Best thing about this workshop is it has got people, the candidates from all types of industries. Usually, being an internal auditor is perceived by the people in a negative manner. So this workshop is helping us to convey our message in a positive manner and improve our images from being just people pointing out flaws. We'll be able to help and add value to the organization as well as in the training of the people, which could costly for the organization. I think it will help me become better in communicating my message in a positive manner. I'm Bazaar. I'm from TCS working as manager audit here. अच्छा, आज का ट्रेनिंग सेशन जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग के रिलेटेड है जो हम लेने आए, अब तक का सेशन काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज ऑफ 2 or 3 फैक्टर्स. सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो यही है कि काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन है. तो इसमें जो हमारे व्यूज़ है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो उससे हम शेयर कर रहे हैं. जो हमारे ट्रेनर हैं असमीन बदामी, वो भी हमें बता रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट विल बेनिफिट अस इन आवर डेली जॉब बिकॉज क्योंकि हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं रोज़ाना की ऑडिट की जॉब में, तो हमें बेसिकली जो हमारे ऑडिटीज़ होते हैं उनको हमें रिपोर्ट के थ्रू ही अपनी कम्युनिकेट करना होता है मैसेज का, जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं. तो ऑब्वियसली जितना हमारी कम्युनिकेशन का मीडियम और मोड ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो उससे हम अपनी फाइंडिंग्स को कन्वे कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन ला सकते हैं अपने काम में. और इस ट्रेनिंग का मेरे ख्याल से मकसद भी यही था कि हम लोग अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए यहाँ पर आए.